Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss some of the lab safety protocols that we need to follow. As we all know, okay, here on this platform we are talking about chemistry lab. So it is very important for us कि हम लोग lab में जाने से पहले, during the lab और at the end of the lab specific safety protocols हैं जिनको follow करें in order to get ourselves into harm. Okay, so lab safety जो है it begins before you go to the lab. It's not about कि जितनी देर आप lab में हैं उतनी देर you have to make sure, लेकिन आपको lab में जाने से पहले you have to prepare yourself in order to start your lab. आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं या ये protocols हैं जो आपने follow करने हैं before you are going to the lab. Here I have listed only 2 points. सबसे पहली चीज ये कि before you are going into the lab you have to take notes. You should know that what are you going to perform in today's lab. उसके लिए you should have a notebook, a pen and a calculator. अगर आपकी lab कोई ऐसी है जिसमें आपको readings भी लेनी है जिस तरह observation and calculations होती हैं तो you should have a notebook, a pen and a calculator ताकि आप readings ले सकें और graph जो है उससे plot कर सकें या जिस भी matter के लिए आपको वो readings required हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपके पास आपकी नोटबुक पेन पेंसिल वट एवर इट इज वो आपके पास लैब में जाने से पहले होना चाहिए. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास लैब में जाने से पहले यू शुड हैव योर पर्सनल सेफ्टी गियर. दैट मीन्स आपका लैब कोट हो गया, आपके गॉगल्स हो गए, मास्क हो गया, मतलब इस तरह की सारी चीजें जो कि आपको लैब में चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप और आप अपने आसपास के सारे इन्वायरमेंट को सेफ रख रहे हैं. Now the dressing for lab. Here I've added some images in order for you to see कि lab में हम लोग किस तरह से हमें dress होना चाहिए. तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो है that is our lab coat. ठीक है. Lab coat is very important. Why? Because अगर in case कोई spillage हो जाता है, कोई चीज गिर जाती है, तो that is not going to harm your clothes or even वो directly आपकी body के साथ in contact नहीं आएगा. If you're wearing a lab coat, तो lab coat के बाद वो आपके कपड़ों पे लगेगा and then it becomes very difficult for it कि वो एक third phase that means आपके skin तक पहुंच सके. So lab coat is really necessary. Okay. Then we have goggles. गॉगल्स क्यों कि हम लोगों जब हम लैब में स्पेशली केमिकल्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स और रिएक्शंस जिसमें हमारे पास फ्यूम्स बनने शुरू हो जाते हैं. तो वो जो फ्यूम्स हैं वो हमारी आंखों में जाते हैं या कभी कोई केमिकल स्पिल हो जाता है तो कोई छींटा जो है वो हमारी आंखों में पड़ जाता है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हमें गॉगल्स का यूज करना चाहिए. देन मास्क. वही जिस तरह अभी हमने पीछे बात की कि कुछ रिएक्शन से फ्यूम्स होते हैं तो वो क्या होता है कि हम लोग उनको फ्यूम्स को इनहेल कर देते हैं इफ वी आर नॉट वेयरिंग मास्क, जिसकी वजह से हमें थ्रोट इन्फेक्शन या नेजल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है. तो इफ वी आर वेयरिंग मास्क सो वी आर कीपिंग आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. Then it comes to the gloves. Gloves भी वही है आपकी फिजिकल सेफ्टी प्रिकॉशन कि आपके हाथों पे या कहीं इधर उधर किसी किस्म का कोई स्पिलेज ना हो या आप डायरेक्टली अगर किसी कंटामिनेटेड केमिकल के साथ या किसी फ्लेमेबल केमिकल के साथ जाके रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इतना हार्म ना हो बाय द यूज ऑफ द gloves. Then कैप इसलिए कि जिस तरह लाइक बाल है हमारे तो वो यूजुअली कैप्स जो है ये हमारे पास उन लैब्स में यूज होती है, ज्यादातर वहां पर यूज होती है जहां पर हम लोग मेडिसिन या कुछ खाने पीने की चीजें बना रहे होते हैं in order to prevent any kind of contamination that can be caused by hair. And last is hand sanitizer. That is very important because when you are done with your experiment you should just clean your hands with a sanitizer in order to make sure that you are just free from any chemical that had been in contact with your skin. Then lab safety practices. These are some, I have added an image in which you can see these are some important lab safety rules. The first one is you should know the location of safety equipment. कि आपके लैब में सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर है या कोई भी ऐसा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है तो यू शुड नो कि वो लैब में कहाँ लगा हुआ है क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज दैट. ठीक है. लीव एक्सपेरिमेंट्स एट द लैब. When you are doing an experiment, you have to make sure that you are not taking it out of the lab. That should just stay inside the lab.
नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, आपके पास सारे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट आप लोग कैसे उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं. You should follow the instructions that your teacher or your lab attendant is giving you. You should dress appropriately before going to the lab, और आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. Don't play mad scientist. एक चीज के अंदर दूसरी चीज डाल दी कि चलो देखते हैं ये क्या होता है. This is a wrong thing. Don't play mad scientist into the lab. It can cause you so much harm that you cannot even imagine. Okay, don't eat or drink in the lab because lab में chemicals होते हैं, और if you are going to eat or drink you are coming in direct contact with those chemicals. Even your food is in direct contact with the chemical, so don't eat or drink in the lab. Don't taste or sniff chemicals. Chemicals are not in order to taste, in order for you to taste them, so you should not taste or sniff chemicals. Don't experiment on yourself, and once you are done with the experiment or whatever you were doing, you should dispose of the waste properly. These are some important lab safety rules. Okay, in the event of a lab accident, what if कि अगर लैब में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो what are you going to do in that. यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स लिखे हुए हैं कि अगर इन एक्सीडेंट्स में से कोई हो जाता है, जो कि मेजरली यूजुअली इन्हीं में से कुछ होता है, तो हाउ व्हाट कैन वी डू. सबसे पहला है हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी. अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो सबसे पहले यू शुड जस्ट रिमेन काम. ठीक है, यू शुड नॉट लूज योर टेम्पर, और आपने फॉरन नर्वस नहीं हो जाना. यू शुड रिमेन काम and then you should initiate life saving measures. Agar koi required hai, then you should just initiate life saving measures. Do not move the person unless there is danger of further harm. ठीक है, then you should keep the person warm and you should call the emergency response. Whatever the emergency services are, you should just call them so your medical emergency can be resolved. Secondly, fire emergency. Whenever you're facing a fire emergency, you should alert people in area to evacuate. The first thing you should do is you should just evacuate the area because there is a fire emergency there. You should activate nearest fire alarm or call security number. Close the doors to confine fire in a specific area. Evacuate to safe area or exit building through stairwell. Do not use lift. Okay, you can just get caught in the lift. Have person knowledgeable of incident and laboratory assist emergency personnel. Now moving towards the third event, which is chemical spill emergency. What if the chemical spill emergency happens? You should attend to the injured or contaminated person and remove them from the exposure as soon as possible. And you should alert the people in the laboratory to evacuate. Jaldi se jaldi evacuate. If spilled material is flammable, turn off ignition and heat sources. अगर आपको पता है वो flammable है, that means it's going to catch fire. तो अगर लैब में कहीं भी ignition है, या मतलब कहीं पर भी आपने fire use करने के लिए fire on किया हुआ है या कोई भी heat source है, तो you should just turn it off immediately. You should then call for assistance and close the doors of the affected area. Have person knowledgeable of incident and laboratory assist emergency personnel. Okay, then we have biological spill emergency. In biological spill emergency, you should attend to the injured or contaminated person and remove them from the area of the exposure. Alert person in immediate area of spill. Close the doors of the affected area. Put up protective equipment. Cover spill with paper towels or absorbent materials. ठीक है, जहां पर भी spill है, you should just cover it with the paper towel. Carefully pour a freshly prepared 1 in 10 dilution of household bleach around the edges of the spill and then into the spill. ओके, यू शुड, आपने क्या करना है, आपने 1 in 10 की डाइल्यूशन में, जो हम लोग हाउस होल्ड घर में जो हम ब्लीच यूज करते हैं, आपने उसको एजेस ऑफ द स्पिल पे पोर करना है और स्पिल के ऊपर भी पोर करना है, बट यू शुड जस्ट अवॉइड स्प्लैशिंग. अलाउ अ 20-minute कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर द ब्लीच सोल्यूशन टू बी इफेक्टिव. Use paper towels to wipe up the spill, working from the edges into the center. Clean spill area with fresh towels soaked in disinfectant. Next one is clothing on fire. अगर
किसी के कपड़ों को आग लग जाती है, you should just roll the person around on floor to smother the flame or drench with water if safety shower is immediately. ठीक है, या तो you should roll that person on the floor या आप उसको मतलब उस पे पानी डालें, you should drench it with water ताकि जो फायर है वो खत्म हो जाए. You should obtain medical attention as soon as possible and you should report the incident to your supervisor. Next is hazardous material splashed in the eye. अगर किसी की आंख में hazardous material चला जाए तो आपने क्या करना है? You should immediately rinse the eyeball. आपने पानी से उसकी eyeball को rinse करना है and inner surface of the eyelid with water continuously for 15 minutes. Continuously for 15 minutes you should just keep on rinsing. You should forcibly hold eye open to ensure effective wash behind eyelids. आपने चाहे आंख नहीं भी खुल रही इरिटेशन की वजह से, आपने you have to make sure कि आपने आंख को खोलना है ताकि आप properly eye wash जो है उसको कर सकें. You should obtain medical attention and report the incident to the supervisor. And the last one is minor cuts or puncture wounds. अगर किसी को minor cut आ जाए या puncture wounds आ जाए तो you should wash the injury with soap or water for several minutes and you should also report the incident to your supervisor. And at the end of your lab time आपने क्या करना है? You should wash your apparatus carefully और आप अपना apparatus जहाँ से आप लोगों ने लिया था वहाँ पे आपने वापस रखना है. अगर if it's possible for you to you can just stay after the lab for just a few minutes और जितना कुछ भी आपने lab में perform किया you should just summarize it. And at the end of the lab teacher जब आपको comments देता है कि आपने क्या चीजें ठीक की या क्या चीजें गलत की या how can you improve it, so you should just pay attention to those comments and you should just learn from your mistakes. I hope that this is going to help you a lot when you are going to the chemistry lab or any lab the next time. And these safety measures or precautionary measures are for your own safety. So if you are going to follow these measures are going to keep you safe. So you have to remember safety first. First you have to keep yourself safe. After that you have to perform any experiment or whatever you are going to do. Now best of luck for the rest of your labs. Bye.